अस्सलामुअलैकुम। तो मुझे लगता है कि हम लाइव आ गए हैं। आज का हमारा डे 23 और नो रेजिस्टेंस जो है वो लगातार जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, देखते यानी कि 23 दिन हो गए हैं और हमने ये यकम रमज़ान से मेरे ख्याल से शुरू किया था और आज 26 रोज़े पूरे हो गए। तो हम साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। साथ हमने टेलमेंट भी सीखी है दिन में थोड़ा सा, तो उसकी भी थोड़ी सी है एक अलग से प्ले लिस्ट। और साथ में ये भी है, टेलमेंट को भी हमने ना प्रैक्टिकल नहीं करना सीखा है। वो भी मैंने सोच लिया कि ये जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं ना अभी कोड डैम पे, इन सारों की जो मेन लेआउट है ना वो हम कॉपी करके रख लेंगे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर कोड में, और फिर उसके अंदर हम CSS की जगह ना टेलमेंट लगाएंगे। कैसा? टेलमेंट लगाने से हमें ज़रा पता लग जाएगा कि किधर किधर क्या क्या चीज़ें लगानी है, और जब वो लग जाएगा तो ज़रा बेहतर हो जाएगी हमारी टेलमेंट भी, और CSS की प्रैक्टिस भी हो जाएगी टेलमेंट CSS की। तो यानी कि यही है बस, और हम क्या कह सकते हैं। चलें इंशाल्लाह ताला बेहतर ही होगा जो भी होगा। बस मेहनत कर रहे हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। तो आज हमने ना राउटर्स के बारे में पढ़ना। राउटर्स बेसिकली हमने पहले भी पढ़े हुए हैं। तो राउटर्स बेसिकली ये होता है कि जो रिएक्ट का मेन फंक्शन है ना वो यही है कि ये ना वन पेज एप्लीकेशन बनाता है। अब जैसे ये यूट्यूब हो गया या और भी फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ये ज़्यादातर ना रिएक्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारा जो मेन पेज है ना यहाँ से ये बार बार रीलोड नहीं होता। हमने अगर नीचे कोई फंक्शंस करने हैं ना तो वो यानी कि वो खुद ही बस उसको राउट कर देता है डिफरेंट URL पे। जैसे होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट अस है, तो हम अबाउट का एक कंपोनेंट बनाया है, उसका जो URL है उसको राउट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस को कर सकते हैं। तो हमारा जो होम पेज मेन वेबसाइट होगी ना वो रीलोड नहीं होगी, वो खुद ही एक कंपोनेंट की जगह दूसरा कंपोनेंट हमें दिखाता रहेगा। तो इसका हमने सिंटैक्स भी देखा था, हमारी पिछले स्ट्रीम्स में होगा, लेकिन आज फिर से कोड डैम के यानी कि इसके अंदर आया है बेसिकली हमारी जर्नी के अंदर। तो ये हमारे रहते हैं, तो मैंने कहा चलो यही कर लेते हैं। साथ रिएक्ट टूवर्स ऐप देखेंगे अगर तो टाइम लगा। आज वैसे 27वीं रात भी है, भी करनी है। ये हम 3 बजे तक लेके चलेंगे। 3 बजे हम बिल्कुल इसको बंद कर देंगे। तो देखते हैं 3 बजे तक क्या होता है। जल्दी से चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। You can work with it. So you can see I have a fresh project with me here. Basically nothing set up apart from React itself. So we can start with scratch, right? So routing is a very common practice, right? You can see even if you take a look at the URL at the moment in the browser, it's codedown.com/playground/something. So what this means is that I'm on a route which is having certain parts, like the path is playground, then inside of playground I'm inside React Snowpack v3 and so on. So you can do the similar thing in React, right? And there are pre-built solutions for you to handle that, right? And one of those is React Router. So first of all, let me just go ahead and clean this up a little bit so it's not as scary as it looks. So it's hello world, for example, right? And let's just replace this. And what I'm going to do is I'm going to try to set up a React router for us here. I'm going to split my terminal. I'm going to start writing by saying yarn add React router DOM. Now remember, I wrote React router DOM because that's the name of the package, right? Now what this package does, what this package truly does, is that it allows you to work with certain browser APIs to, for the lack of a better word, fake a URL into user believing that you are actually on that page. And I'll tell you what it allows you to work with certain browser APIs to, for the lack of a better word, fake a URL into user believing that you are actually on that page. And I'll tell you what I mean by that. Just stick with me here. Let's just first of all, once this installs, let's just do a hello world here, right? So it is done. And what we can do now is we can import a bunch of components which allow us to do basically what I'm talking about. So I'm going to say import from React router DOM. And what we need is a couple of things. The first thing we need is a browser router. The second thing which we need is a route, right? So what does this mean? This means that I have a router component, which is going to be a top level component, which is contain all these routes which we will define, right? So the first thing I have to do is I have to define this as a top component
in my app, right? Now, once I have defined this component as the top component in my app, I have to define these individual routes, which needs to be, matched. So what I'm going to do is I'm going to start with a route and end it with a route. I'm going to say the path, what this path should be, what the path should match, right? So this path should match, let's say, hello world in our case. Once I do that, anything I write here inside of this would be rendered only and only if this matches the hello world route. So let's say this is I am on route hello world, right? And let's just go ahead and actually wrap this whole thing inside a div as well. And I can just say right here, I am just h2, right? Something like this. All right. So once we do that, if I give this page a refresh, what you're going to see is once Snowpack is done compiling a bit of dependencies. Let's see. All right, so it's done, and we can see now that it just spits out I'm just in H2. So if I open this in a new tab, you can see we still get I'm just in H2 because we have defined hello world on this route. So let's just go ahead and visit that. Hit enter, and you can see that we get a 404. And let me tell you why do we get that. Now the reason we get a 404 when I was at hello world is because Snowpack right here is not configured to send our index.html file, which we have here, on every route, right? So let me tell you what's happening here exactly. When you visit a route like this, or in general, a homepage like this, what's happening is that Snowpack, or your backend server in this case, which is Snowpack, sends this index.html file, right, which contains certain scripts, which boots up React, which boots up this component, and this component realizes what path you are on, right? So in order for this component to run, this needs this index.jsx file. This index.jsx file needs this index.html file. Therefore, in the first place, your backend server should send this index.html file for pretty much everything. But it does not happen in the case of front-end applications, or you have to configure it somehow. So in this case, that's why we get a 404 error when we try to visit that URL directly. But what we can do instead is we can use another component here, which can allow us to fake redirect or navigation. And it would be nav like this, right? You can also put it in div, it's fine, but I'm just a little fancy. So what you can do is you can say link to and then hello world. So it's like ahref, but it's for React routing, internal React routing. And I can say go to hello world, because we only have a single link at the moment. We can also define something like link to slash, and I can just say go for, right? So the moment we have something like this, you can see the first thing we see is an error that you should not use link outside a router. So let's just go ahead and fix this by bringing the router, or actually let's just make the router the actual main child of the page. So once we have that, you can see we have our links coming up, and we can actually just throw in an ordered list here for it to just be a little bit prettier, right? And let's see, looks like I have to configure prettier on this header, right? It's just a waste of time manually formatting all this code. Maybe we'll do that probably sometime later, but now you can see that it has started looking just like you would want it to look like, right? So now if I click on go to hello world, you can see you get I'm on the route hello world. And if I open this in a new tab, take a close look at what happens to the URL up here when I click on hello world. You can see the URL actually in fact changes to I am on hello world, right? I'm on route hello world. And if I go back to home, you're going to see the URL changes back and forth, right? And if I refresh on this page, you're going to see we get the similar error. And I explain to you the reason why, because in this case, when I click on this, if I go to inspect, the net, oops, refresh, clear this out, and if I click on this go to hello world now, you're going to see no network request has been made, right? You can see I'm on all, there is no filter, and no network request has been made. That means React code did not go to server to check if this route existed or not. It handled this routing internally with the help of the browser router, right? ये लाइन अच्छी है ये जो रिएक्ट है ना और बेसिकली React code did not go to server. React code did not go to server यानी कि React code
सर्वर के पास कोई रिक्वेस्ट, नेटवर्क रिक्वेस्ट, कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट लेकर नहीं जाता कि फॉलोइंग राउट होंगी या नहीं। To check if this route existed or not, it handled this routing internally with the help of the browser router. It handled it internally by the help of browser router. Right? So yep, that is what is happening. When you refresh this, it actually goes to the server, right? The server says that, hey, I don't know like what this route is. If somehow you were able to go ahead and return pretty much the same index.js file for this route as well, this route right here as well, you would be able to serve the right code even on refreshes, which is exactly what you want on production applications. But it's fine on development if you want to skip it. But yeah, you can configure that here as well if you would like. But yep, that is pretty much it in terms of introduction to the browser router and how you configure it. We will pretty much take a look at a bunch of other things in the upcoming videos. But yeah, that's a solid start. So yeah, that's all for this one. I'm going to see you in the next video really soon. Hey everyone, welcome back. And in this video, let's just quickly go over and take a look at an exact route match. What does that mean? So let's say I define a route which is our homepage, and I just say I am on homepage, right? And if I go ahead and refresh this tab right here, what you will be able to see is that we get I am on homepage, which absolutely is fine. But if I go to the hello world route, you can see that I get I am on hello world, but I also get I am on homepage. Now, why is that? Well, this is because by default, the behavior of these routes is to match the route first as a path, and then pretty much anything after that as well. So what do I mean by that? Means if you're on homepage, basically what's happening is that you are pretty much routing, the router matches the slash, which is at the end of the URL, but anything after the slash also matches, right? So this route here will also return you I am homepage if you visit this with a link, right? So I can just go ahead and, for example, create a go to random link. I can just say this is some weird route, and if I refresh this again, and if I click on that random link, you can see I still get I'm on homepage. Why? Because it matches anything after this slash, which is pretty much anything. Similarly, this route would appear every time I have I'm on hello world, or I'm on pretty much any other route as well. So I can copy this, actually revert back and change this to this, and if I refresh this, click on the link, you would actually see that I still get I'm on hello world, even though I'm on some weird route. Now, in order to fix this problem, all you have to do is always, and always, it's a good practice, set this exact attribute on your router component. And this basically just means exact true, right? In JS6, you can just omit the true bit if you like. It's just a style. So even if you just write exact like this, it just means exact is set to true, right? And the moment you do that, you're going to see that now it's actually much stricter. Now, if I click on the hello world, you can see we no longer get I'm on homepage. I get it here, but I don't get it here, right? And on the random link, you can see we pretty much get nothing. So this has solved our problems, which is, the weird behavior which we were getting with the routes. So this is something more or less what I feel is a common practice which you should anyway do, right? Whenever you're defining routes, just put an exact keyword, because in most of the cases, it will do what you expect it to do, right? Instead of having these edge cases. But yeah, that's pretty much it for this video. Hopefully you were able to understand it. That is all for this one. I'll see you in the next one really soon. Hey everyone, welcome back. And in this video, we're going to be taking a look at dynamic routes in React, which is also pretty helpful, especially in case when you're building dynamic apps, which you probably will be.
when you're working with React. So let's say you are building a social media app or whatever, and you go ahead and you want to have a route which basically catches everything after user, right? So it could be a username, Mehul, or any other name which you want to capture. Now, if you think about it, if you remove the exact keyword, that would kind of fill our purpose. But this is a bad hack, right? Because now you're not only just catching Mehul, but you're also catching Mehul slash this, or slash this, or slash this, right? So this is clearly not a solution. So we do need exact, but what we can do is we can define a dynamic route or a dynamic piece of the path here. And the way we do that is we put a column and we write the variable name which we want it to be called, right? In our case, let's just say we just say username as the variable name, right? And what do I mean by variable name? We'll see. But what this means is I can just go ahead now and I can just say I want to render a custom user component with me, right? And I can just go ahead and create this function user component in probably in a separate file. Yeah, let's just go ahead and create it in a separate file. User.jsx function user like this. We can just import React real quick. And once we do that, we can just say I am a user component, right? And don't forget to export this. And once you do that, you will be able to see that if I refresh it, let's see, or I haven't imported it yet. Yeah. Also need to import user component from user.jsx, right? So the moment I do that, you're gonna see that if you just go ahead and create a bunch of links here, let's say profile one, which is user/Mehul, right? And let's just create this link a couple of times. File 2, 3, 4, right? Mehul, XYZ, CODEDAMN, playground, whatever. Right? So we have 4 profile links. And now whenever I click on one of them, you can see we get I'm a user component, right? That is fine. I mean, that's great progress. But how do I capture this part, right? On which path I'm on? That is what this variable name is. And that is what it would help you with. Now, in order to capture this, what you have to do is you have to use a custom hook in React router, right? And the way you do that is you call this hook, but you know what this hook is called, rather I should say, is use params, right? From React router doc. And actually, I'm in the wrong file. Let it be user.jsx. So import this, and I just go ahead and call this right here. Now, what this use param hook returns, this returns as an object of all the parameters which we supplied, right? So if I go ahead and take a look here, you can see we already have a username as a variable. This will return as an object, the username being the value of the path, right? So I can say this is username, I destructure it like this, and just say the user is something like this, right? So you can see now I'm on the user component playground. If I click on file 3, I'm on CODEDAMN, XYZ, and me, right? So this helps us pretty much set some context, right? And now you can use this username component, for example, and use effect, but React query. If you're using React query for performing fetch request, get some data with user name variable, right? Like their account details or anything, and pretty much just use it to display some dynamic data right here, right? So that is how it works. That is how the routing part works, right? Maybe it's a public profile or anything, and that's how you can do that. But yeah, that's the basic of it, how you would grab a dynamic path, how you would render a component, and how you would grab a यूजर dynamic. नेम You का can क्या do इस्तेमाल किया? यूजर वेरिएबल लगा दिया, इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं किया. But yeah, that's the basic of it, how you would grab a dynamic path, यूजर but just नेम कहीं using पे variable लिखा है? performing for you account, something like this. यूजर नेम यहाँ पे लिख दिया, यूज पैरामीटर कर दिया. अच्छा जी, चलो आ जाए तो पीछे आ जाए. You want to have a route which basically catches everything after user, right? So it could be a username, Mehul, or any other name which you want to capture. Now, if you think about it, if you remove the exact keyword, that would kind of fill our purpose, but this is a bad hack. वर्डप्रेस में परमालिंक्स होते हैं. परमालिंक्स भी ऐसे ही होते हैं ना कि जिस फाइल में हम जाते हैं, जिस भी उसमें जाएंगे तो वो उसी का पाथ सेट कर देते होते हैं.
या सोशल मीडिया में पोस्ट का नाम यूआरएल के आखिर में होता है। इसलिए ये फिर slash this or slash this, right? So this is clearly not a solution. So we do need exact, but what we can do is we can define a dynamic route or a dynamic piece of the path here. And the way we do that is we put a column and we write the variable name which we want it to be called, right? In our case, let's just say, we just say username as the variable name, right? And what do I mean by variable name? We'll see. But what this means is I can just go ahead now and I can just say I want to render a custom user component with me, right? And I can just go ahead and create this function user component with me right now, and I can just say I want to render a custom user component with me, right? And I can just go ahead and create this function user component in probably in a separate file. Let's just go ahead and create it in a separate file, user.jsx function user like this. We can just import React real quick. And once we do that, we can just say, I am a user component, right? And don't forget to export this. And once you do that, you will be able to see that if I refresh it, let's see, but I haven't imported it yet. Okay. Also need to import user component from user.jsx, right? So the moment I do that, you're gonna see that if you just go ahead and create a bunch of links here, let's say profile one, which is user/Mehul, right? And let's just create this link a couple of times. File 2, 3, 4, right? Mehul, XYZ, CODEDAMN, playground, whatever, right? So we have 4 profile links. And now whenever I click on one of them, you can see we get and a user component, right? That is fine. I mean, that's great progress, but how do I capture this part, right? On which path I'm on. That is what this variable name is, and that is what it would help you. Now, in order to capture this, what you have to do is you have to use a custom hook in React route, right? And the way you do that is you call this hook, or what this hook is called, I should say, is use types, right? From React router doc. And actually, I'm in the wrong file. This should be user.jsx. So import this, and I just go ahead and call this right here. And what this use parent hook returns is returns as an object of all the parameters which you supplied. रुक जाओ मुझे मेरे नोट्स मैनेज करने दो। यहाँ पे सारी हुक्स आ जाएंगे ना, थोड़े से पेज छोड़ देते हैं यहाँ पे हुक्स, और यहाँ पे जाके इसको फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, डायनामिक राउट्स।
this, what you have to do, and that is what it would help you with. Now, in order to capture this, what you have to do, you have to use a custom hook in React routing, right? And the way you do that is you call this hook, but you know what this hook is called, rather, I should say, is use params, right? From React route router dot. And actually, I'm in the wrong file. This should be user.csx. So import this, and I just go ahead and call this. Right here. Now, what this use param hook returns, this returns as an object of all the parameters which you supplied. Right? Object of all the parameters which you supplied. Right. So if I go ahead and take a look here, you can see we only have a username as a variable. So this will return as an object, the username being the value of the path, right? So I can say this is username, I destructure it like this, and this say the user is something like this. Right, so you can see now I'm on the user component playground. If I click on file 3, I'm on CODEDAMN, XYZ, and Maven. Right, so this helps us to pretty much set some context, right? And now you can use this username component, for example, and use effect or React query. If you're using React query for performing fetch request, fetch some data with user name variable, right? Like their account details or anything, and pretty much just use it to display some dynamic data right here, right? So that is how it works. That is how the routing part works, right? Maybe it's a public profile or anything, and that's how you can do that. But yeah, that's the basic of it, how you would grab a dynamic path, how you would render a component, and how you would use hooks to grab out that information, right? So yep, that's pretty much it for this one. I'm going to see you in the next one really soon. Hey everyone, welcome back. And in this video, I want to go ahead and show you how you can use fetch request to fetch basic data in React.js. And mind you that we will be learning about React query in a different course, which is an actual library, just like we use React Router DOM for performing routing. We will be using React query for performing all these fetch requests. But React query is a big
librarian itself, right? So we have a dedicated course on that. Don't worry, that is included in this learning path which you're part of. So it's fine. You would be able to access it once you complete the React course. रिएक्ट क्वेरी किधर है? कोड डेमो के अंदर देखते हैं किधर है रिएक्ट क्वेरी. नई बात है कि रिएक्ट क्वेरीज में रिएक्ट क्वेरी कहते हैं एक ही जगह इस्तेमाल होती है, देख लेते हैं. उसमें तो हमें आज तक नहीं बताया रिएक्ट क्वेरी भी कोई चीज़ है. ऐसा यह सारी बातें front end tooling, React UI, React Query, ये पढ़ा React Query को network request. अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे React Query. ये what is React Query environment? Internal React Query with debugging query annotation using dev tools, how coaching works, caching works, and React Query. Sharing data across multiple components without making multiple requests. Caching, अच्छा जी, 2 hour की वीडियो है इसमें. 6 लेक्चर 21 मिनट. क्वेरीज 14 लेक्चर. React Query States, React Query Dev Tools Expand. मज़ेदार हिस्सा होगा क्वेरी कीज, डिपेंडेंट क्वेरीज, स्मार्ट गिटहब ऐप with React Query, creating a mini blog with React Query, recreate the mini blog, get query data, cache time, transform query results, set query data, stale time, play with cache time and stale time, default query option, check nice. Mutation side effect, hook, mutation side effects, building a to-do app with queries plus mutation, building a to-do app part 2, what's the difference between mutation and queries. ये तो जब करेंगे तब पता लगेगा, यानी कि ये है अभी हिस्से में हमारे में. सही है भाई, अभी यानी कि मेहनत अभी बहुत पड़ी है भाई साहब. मुझे तो लग रहा था रिएक्ट खत्म होने वाली है. चलो यार, डाटा फैचिंग इन रिएक्ट देख लेते हैं. अभी के लिए क्वेरीज देख लेता हूँ. ये मेरे ख्याल से जो क्वेरीज है ना वो फैचिंग का काम होती है. फैचिंग इन रिएक्ट तो कई है रिएक्ट क्वेरीज का, मतलब पढ़ेंगे तो पता लगेगा. अभी के लिए मेरे ख्याल से फैच डॉट जैसन और वो ऐसे करेगा To fetch पहला और देन लगाएगा 2 basic data in React.js. Remind you that we will be learning about React queries in a different course, which is an actual library, just like we use React Router DOM for performing routing. We will be using React Query for performing all these fetch requests. But React Query is a big library in itself, right? So we have a dedicated course on that. Don't worry, that is included in this learning path which you're part of. So it's fine. You would be able to access it once you complete the React course. But anyway, just to give you an idea of how you can do it right away, even without React Query library, I gave you a little bit of idea of how this would work in the last video when we closed it, but let's just take a look at that formally. So what I'm going to do is I'm going to go ahead and right here, I'm going to create a file inside of this public folder called users.json, right? And this is just a static file, which I'll just make it myself. I'm going to say something like Mehul has name Mehul and age 22, right? Pretty much similar things for John, and let's say for CODEDAMN as well. So we can just change the name of them as, John as John, and this could be font, right? Anything. So what this does is that this allows us to have a static file in place which we can fetch, because remember all the assets in this public folder are available on the main domain.
So if I go ahead and write users.json right here, you can see that we get this users.json file, which is pretty awesome, right? So what we will do is we'll dynamically fetch this, and we will try to render content from it. I'm going to say fetch. What do I want to fetch? Users.json, and then when I fetch the data, I want to set this data to, let's say, a state variable, user data, set user data, which is pretty much use state of empty object at the moment, right? And we can just import use state as well. So once I fetch this, what I want to do with data is I want to get the of username, right? Which is what our parameter is. And I want to set user data to that, right? And finally, what we can do is we can have a provision where we are trying to do something like paragraph. I just say name is user data dot name, right? And the age, basically, which we also use, is user data dot age, right? So you can see right now we don't get anything because we are not on, we are on CODEDAMN, right? But if I just give a refresh for this user effect to run, and if I visit the profile one, you can see I'm a user component, which, or because we are doing it the wrong way, it has to be passed at JSON first, and then we can use the data, right? That's a fault, but the moment we do that, you can see now on Mayhole, it starts rendering the correct value. If I visit XYZ, it does not render anything for XYZ, but can you guess why that happens? Well, that happens is because this function does not run once the username changes. And a quick fix for this is you just add username as a dependency to this one, right? Now, if I click on Mayhole, we get the name. If I click on profile 3, we get the updated data again. Playground, well, we don't get it because we don't have that. We have John instead, so let's just replace it with playground and give it a refresh. And let's see if I click on this now, you can see we get John now, right? So we don't have data for XYZ, that's why. But yeah, that is how, in a bad way, kind of, you can perform a fetch request. I know that this can be improved a lot. We are just using a single file, so we don't need to perform multiple fetch requests again and again. But think about this in the following way. Let's say if you had playground.json and playground.json and all those files there, then you would have to perform all these multiple fetch requests. But yep, this is how you would perform a fetch request inside of React. यूज इफेक्ट के अंदर यूज इफेक्ट के अंदर हम डाटा फर्स्ट करते हैं इसके यूज इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, एक फंक्शन होता है और एक डिपेंडेंसी अरे होती है। डिपेंडेंसी अरे यहाँ पे आके ये फंक्शन खत्म होगा, यहाँ पे आके डिपेंडेंसी अरे होगी, उसके अंदर हम यूजर नेम लिख देते हैं ऐसे करके। यहाँ पे हमारे पास एक ऊपर कॉस्ट करके इफेक्ट यूज स्टेट भी है, यूजर डाटा सेट यूजर डाटा यूज स्टेट में हम उसको रख देंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। और यूज इफेक्ट के अंदर हम फैच इस्तेमाल करेंगे। फैच के अंदर हम कर देंगे यूजर डॉट जेसन डॉट देन बनाएंगे डॉट देन डाटा और फंक्शन, और ये हर फंक्शन रिटर्न कर देगा हमें डाटा डॉट जेसन, क्योंकि फैच के अंदर एक रिस्पॉन्स होता है ना, तो डाटा डॉट जेसन आ जाएगा। डाटा डॉट जेसन के बाद एक और डॉट देन लगेगा, डॉट देन के अंदर हम जो डाटा है
उसको कैच करेंगे और अब इसको हम सेट यूज़र डाटा के अंदर रखवा देंगे। डाटा वही डाटा रखवा देंगे यूज़र नेम के साथ। ये हमारा और देन बंद हो जाएगा। ये हमारा ये भी बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा ये यहाँ पे और फिर ये आ गई, ये आ जाएगा और ये डिपेंडेंसी रे आ जाएगी और हम नीचे शो कर देंगे या शो कर देंगे यहाँ पे टूल के अंदर एक डिव है, डिव में हमारे पास एक पी है, पी में आ जाएगा रोल हम लिख देंगे यूजर डाटा डॉट फिर आएगा एज डाटा So we're going to save variables and render the data after that. We will take a look at a much better way of handling network requests in the React Query course, which is part of this learning part. So don't worry about that anymore. But yeah, that's pretty much it for this one. I'm going to see you in the next one really soon. सीधा होके बैठते हैं। लैपटॉप बड़ा गर्म होने लग गया यार, ऐसे मत करो भैया। प्रोजेक्ट को देखते हैं जल्दी जल्दी क्या है ये। Viewers project app. Introduction to project. Welcome to another React practice project. In this project, you have to create a tool app in React, which is a simple UI app fetching data over network and then displaying it on the screen. Take a look around and get yourself comfortable with the interface. You will be spending some time in this interface. You can open files in your project file and once you do this, you can toggle other options from the left menu. In the center you will see your active code screen on the right side. once अच्छा जी फाइल्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं जी। app.jsx है और loading.jsx है जो लोडिंग कराएगा और tour.jsx है, टूर कंपोनेंट है ये। और इसके अंदर एक और tour.jsx है, ये भी टूर कंपोनेंट है। दो दो क्यों है ये, लग तो सेम ही रहे हैं। अच्छा टूर और टूवर्स दो अलग अलग हैं। अच्छा जी ये ध्यान रखना। और ये index.jsx है, सोर्स में यही कुछ है जी। चलो जी करते हैं इसको मार्क और आगे चलते हैं। इससे पहले हमारा लैपटॉप जो है वो गर्म हो जाए करते हैं पागल में उससे पहले हम गर्म कर लेते हैं इसको। The project relies on data from a remote API, so let us fetch that JSON data before doing anything else. In React, there are much better ways to handle data fetching, which come back in with caching and revalidation of data. But because this is a beginner level classroom project, we want to learn how to do it using just fetch API provided by the browser. This is how a basic fetch request can be performed with a React component const by
My component is equal to use effect. ये use effect use effect के अंदर fetch है, fetch किया है not then data work with data use effect के अंदर ही लगने data से break this down we use to run this query only once. How do we make sure we run this query only once? We make sure that passing an empty array as the second argument in the use fact ठीक हो गया जी यूज इफेक्ट के अंदर हम ऐसे ही करेंगे call every time any dependency within that dependency array get changed. This is a simplified statement, but would work for now. Therefore, by passing an empty array, we won't use fact to never be called again. अच्छा जी, because all use facts are automatically passed once the component is mounted. This will run exactly one time per component mount. Challenge is to pass this lab. Take care of the following things: create a state variable tour, and for you use effect hook and call the fetch tours. अच्छा जी, यूज इफेक्ट के अंदर ये फंक्शन जो है ना ये कॉल हो inside fetch tours fetch the content of the API. Once fetch set the data dot to tours state variables. Fetch set the data to tours state variable. अच्छा जी, this should not automatically display some data in UI which should pass your test. The first your name displayed should be best in Paris in 7 days tour from the API after you fetch it. Second your name अच्छा जी, ये तो जो जो उसमें करेगा होगा. सबसे पहले तो हम ये एसिंक का वेट इसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमें इसका पता नहीं है एसिंक का वेट का. हम डॉट डेडलाइन के साथ ही करेंगे इसको. ऐसे ही है ना. फंक्शन फैच टूल जो है ना वो हमारा यूज इफेक्ट के अंदर आएगा. मेरे को तो यही लगता है. अभी ऐसे ही चाहिए यूज इफेक्ट के अंदर यानी कि ये फंक्शन है. The function fetch tours dot map और tour progress कर दी. टूवर्स डॉट मैप के ऊपर अब टूवर्स जो है ना वो बेसिकली हमें फैच करना है. राइट गो टू फैच टूवर्स देयर. लेकिन मैं इसको रेसिंग के साथ में करूँगा. मैं इसके लिए इफेक्ट के साथ करूँगा. फिर ये फंक्शन तो नहीं आएगा फैच टूवर्स. चलो इसको ब्रेक कराने देते हैं. यहाँ पे हम अपने यूज इफेक्ट हुक के साथ ज़रा यूज इफेक्ट हुक है जो भी हमारी ये होती है. इसके अंदर एक होता है हमारे पास फंक्शन. करके और एक इसकी डिपेंडेंसी रखी है वो हमने रखनी है एम्प्टी अरे. और इसके अंदर अब वैसे ही यानी कि वो चलेगा तो ये खुद ब खुद ही परफॉर्म कर देंगे.
टूवर्ड्स को कर सकते हैं, इनसाइड फैच टूवर्ड्स फैच एंड कॉल दी फैच टूवर्ड्स। हाँ, इसके अंदर मैं फंक्शन लिख सकता हूँ, वैसे देखो फंक्शन लिख दिया हमने, वो उसको लिखेंगे और यूआरएल ऊपर सेट कर दिया हुआ है, तो यूआरएल लिख देंगे। ये हो गया, यूआरएल आ गया। अब इसको फैच यूआरएल को डॉट देन लगा देंगे, फैच यूआरएल। हाँ, इसको हम लगा देंगे डॉट देन, डॉट देन के अंदर डाटा आएगा, डाटा डॉट जेसन में ये रिस्पॉन्स आया ना बेसिकली, ये इसको रिटर्न करवा दिया, रिटर्न करवा दिया डाटा डॉट जेसन को। इस डॉट देन के अंदर ही दूसरा डॉट देन लगेगा, इस डॉट देन के अंदर ही दूसरा डॉट देन लगा दिए, तो ऐसे ही रहा। इसके अंदर ही डॉट देन कर रहे हैं इसी डाटा डॉट जेसन के बाद डॉट देन लगेगा, डाटा आएगा। ओके, इस डॉट देन को पकड़ के हम सेट टूवर्ड्स को लगा देंगे, इसको और भी लिख सकते हैं, वैल्यू भी लिख सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे वैल्यू डॉट जेसन कर सकते हैं। एसिंक फंक्शन पैरामीटर रिस्पॉन्स एसिंक डॉट देन करता रहा हूँ, अगर मैं ये फंक्शन फैच को खत्म करूँ यहाँ से, इसे शो करने लग गया, लेकिन मैंने ये फंक्शन नहीं यूज़ किया, ये फंक्शन कहाँ पर यूज़ करना है, इस फंक्शन के अंदर हम यूज़ करके लिख नहीं सकते। तो ये वाला जो ऊपर वाला फंक्शन है इसका नाम हमने रखना है, इसको वाला फंक्शन की जगह हमने फंक्शन फैच टूवर्ड्स, और ये रिटर्न नहीं करेगा, ज़्यादा कुछ रिटर्न कर देगा। इसका नाम चेंज कर देगा, देख लेते हैं कौन सा कुछ जाना है हमारा। सी ये इस फंक्शन में आ गया हो गया शो, देखें
guys. Yippee! You! Nice. मैं देख रहा था कैसे इसने लगाया था नीचे मैं उसने यहाँ पे लगाया टूल ड्रॉप में के अंदर एक ज़्यादा फंक्शन लगाया और इसने रिटर्न किया हुआ टूल ड्रॉप नहीं है अब क्या है sometime network call might take a few seconds to complete. In that case, you almost always want to convey the message to user that you are loading something, especially if you have no upfront data to show to the user. In this lab, we will implement a loading screen while our data is loading. Challenge instruction to pause this lab, take care of the following things, create a state variable loading and initialize this loading to true. Done for you, ये कर दिया है. Before you call your network, ये सिंक ये लगाया उसने इसके साथ और इसके साथ ये सिंक लगा के इसको फिर उसने कॉन्स डाटा लिया इजिकल टू वेट फैच यू रन कर दिया और फिर कॉन्स जेसन डाटा ये भी एक वेरिएबल ही है यानी कोई भी वेरिएबल ले सकते हो जेसन डाटा इज इक्वल टू वेट डाटा डॉट जेसन लगा दिया उसमें वेट पहले आ गया ना ये सिंक इधर लगा दिया और ये सिंक वाई लगा देते हैं जिस फंक्शन में लगाना होता है और फिर साथ वेट कर देते हैं अंदर यहाँ पे वो फेच कर गए यहाँ पे हमने डॉट देन लगाना था एक डॉट देन में करना था डाटा डॉट जेसन करना था फिर डॉट देन लगाना था फिर उसमें ये स्टार्ट टू करना तो इसमें वेट पहले आ गया फैच कर लिया तो जेसन डाटा का फिर वेट कर लिया और फिर डाटा डॉट जेसन कर लिया certain order to follow here फैक्टर्स ने यूज़ करना फैच टू बस वैसे ही कॉल ही करते हैं ऐसे और कुछ नहीं किया उसमें मैंने तो सारा इसके अंदर ही कर दिया वो फंक्शन ऊपर अलावा रहने दिया इफ लोडिंग रिटर्न में लोडिंग अच्छा जी लोडिंग वाली अवेलेबल अदरवाइज ये अब हमने क्या करना create a state variable before you call your network request. Set the loading variable to true. Once network request complete, set the loading variable back to false. Your render screen should show the loading component for some time and once data is loaded, it should automatically show again. मुझे समझ नहीं इसमें क्या करना है set loading to false here set loading का लिखना है ऐसे लिखना है मुझे समझ नहीं आ रहा नेटवर्क रिक्वेस्ट राउट से होती है
ऐसे ही हमें फैच कर रहा होगा तो पहले का बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ठीक है, तो लोडिंग नेचर में आ गई ट्रू है तो ये कर दो। वैसे ही वो ये काम कर लेगा तो उसको फॉल्स कर दो तो फिर वो ये रिटर्न कर देगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। लोडर आ गया जिसके अंदर रन टेस्ट करके देख लो और तो नहीं ना कुछ करना दे टाइम कम है, पानी ज़्यादा है, 3 अभी करने हैं जल्दी जल्दी। सेंड and now that we have data and longer let us quickly clear the UI photo. For this you have to pass your file data as a prompt and then use the template provided to render UI where we will be working with 3 files in this lab actually. Prompts to pass this lab take care of the following thing. Pass down your tools into the tools component in the app.jsx. टूवर्स के अंदर ये टूवर्स हमें दो टूवर्स इसको हमने टूवर्स करना और हमारे टूवर्स into the tools component can be added inside the tool file. You have to map on the path tool data in the block and render tool component for every item. अच्छा यहाँ पे props आ गई, take out tools from props। तो देखो क्या करना है, बस इधर से हमें पाँच लिख लेना है। यहाँ पे क्या है टूवर्स है, टूवर्स टूवर्स का इज इक्वल टू प्रॉप्स। ये आ गया प्रॉप्स से भाई टूवर्स और यहाँ पे H2 के अंदर आ गया ऑल टूवर्स मैप ओवर टूवर्स ऑन डिस्प्ले यूआई रीड इंस्ट्रक्शन हाउ यूआई शुड लुक। अच्छा जी यहाँ पे हमने मैप कर देना है इस टूवर्स को, तो इसको प्रॉप्स रख दिया, प्रॉप्स टूवर्स डॉट मैप कर देंगे। tour id to image something info price 3 name something in the tour component we use a cross path above the render above passed above to render the following markup article class name single tour image। अच्छा ये अगर टूर से भी इंपोर्ट किया हुआ टूर ये सारे के सारे प्रॉप्स रख दिए। रंजन एंड देयर रीड इंस्ट्रक्शन इस पर रंडर करना है, कैसे करना है आर्टिकल क्लास नेम टूर्स टूर प्राइस info button not interested। Make sure you place the placeholder correctly। यहाँ से ये सारे के सारे रेंडर होंगे टूवर्स में जाए। ऐसे ही यहाँ पे उस टूवर्स के ऊपर मैप लग गए, यहाँ पे यानी कि सिंगल टूवर हम लिख लेंगे सारा का सारा। उसने ये लिया ये मेरे ख्याल से
इस टूअर्स डॉट में टूअर्स के अंदर से आएगा रिएक्ट वर्स प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर ये सारा मटेरियल टूअर कंपोनेंट यहाँ पे आना है, इसको रिटर्न कर रहा है इस तरह से। अब इसमें हमने इमेज में रखना है नेम आएगा ऐसे आएगा मेरे ख्याल से इमेज वाला ये आएगी इसके अंदर यहाँ पे आ जाएगा नेम H4 यहाँ पे भी नेम अगर इन्फो होता है भी यहाँ पे इन्फो आनी है इन्फो आ गई और ये प्राइस की जगह आ जानी है प्राइस प्राइस। अब इन्फो यहाँ पे भी है इन्फो नॉट इंटरेस्टेड बैग बटन नीचे टूर इन्फो टूर प्राइस टूर इन्फो प्राइस लिख देते हैं यहाँ पे। ये सारे प्रॉप्स हमने इसके अंदर रख दिए। अब सारी गाड़ी हमने इसके अंदर रख दी प्रॉप्स पे इंक्लूड कर दिया टूर को यहाँ पे। अब हम यहाँ पे टूवर्स डॉट मैप करेंगे ऐसा ही है कुछ स्टेट का भी कोई काम था यहाँ पे कैसे लिखा हुआ देख लेते हैं। टूवर्स पकड़ा इसको मैप कर दिया और वही व्यक्ति और मैप के अंदर हमने क्या करना है टेक आउट टूल्स फ्रॉम प्रॉप्स। मैप के अंदर हमें कुछ करना है वो अब हमें पता नहीं है कि क्या करना है हमने। हाय लाजी हाय लाजी हाय लाजी टूल्स डॉट मैप मैप में हमने इसको रिटर्न करते जाना है इस टूल को मेरे ख्याल से। ये सारे के सारे इस टूल इसको रिटर्न करना है। पता नहीं इसको क्या करना है देख लेते हैं। चीटिंग 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 चीटिंग
cheater, 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 cheater. टूवर्स भी है ना, टूवर तो आ ही गया, टूवर्स भी हो, टूवर्स में से क्रॉप्स निकालिए, देन डन सेक्शन टूवर्स डॉट मैप टूवर, और ये टूवर की जो है उसके अंदर से टूवर क्रॉप निकाल के की इज इक्वल टू टूवर डॉट आई डी रख दिए। तारा 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 टूवर में हमने सारा कुछ ऐसे ही रख दिया था, ये तो सही किया ना हमने। बस ये इधर नेम रखना है, वहाँ पे हमने मेरे ख्याल से कुछ और रख दिया था, इन्फो नेम ही, और ये डॉलर प्राइस डालनी है। इन्फो वैसे ही है, रीड बटन वैसे ही है, ये वैसे ही है। देख लेते हैं हमारे टूवर में हमने यहाँ पे भी नेम देना है, और नेम के बाद हमने बाकी ये सारा कुछ ठीक है। टूल में जाकर ना हमने मैप को क्या करना है, मैप में हमने मैप का जो फंक्शन है ये हमेशा प्रोग्राम कर लेते हैं। मैप में हमने ये को दिया है, इसके अंदर हमने वो टूल का कंपोनेंट है ना, डी ओ यू आर टूल, ये वाला टूल का कंपोनेंट, इसके अंदर हमने टूल के कंपोनेंट के अंदर क्या दिया है, टूल के कंपोनेंट के अंदर हमने टूल रखवा दिया, और की रखवा दी उसकी, फिर करके स्ट्रक्चर करके टूल लिख दिया, और की रखवा दी, की इज इक्वल टू टूल और आईडी, इट्स शो हो रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे मैप ओवर टूल्स एंड डिस्प्ले यूआई, डिस्प्ले यूआई कैसे ये सारा कुछ ऐसे ही टूल्स image
टूअर डॉट जेएसएक्स के अंदर बार्स पकड़ी सारी की सारी मैसेज आ गई। आर्टिकल के अंदर इमेज सोर्स में इमेज और नेम आ गया। सोर्स में इमेज और नेम आ गया। एक क्लास में टूअर इन्फो मैच फॉर में नेम आ गया। एक क्लास में टूअर में आ गया। गिफ्ट आ गई। बी में आ गई इन्फो। बी में आ गई इन्फो डिलीट में नोट इंटरेस्टेड और ये टूअर यहाँ से चला गया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट टूर टूर डिफ़ॉल्ट हो गया। अच्छा जी, अब टूवर्स डॉट जे एस एक्स में कोई मसला है। ये लाजमी वाला जो मसला है ना, ये इसके ऊपर ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर भी तो कुछ किया ना। यहाँ पे तो टूर मेरे पास सेट ही नहीं किया। यहाँ पे मेन में टूवर्स 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 बाकी सारा कुछ ठीक है। इसकी ऐप डॉट जे एस एक्स का ये देखो टूवर्स इसको इधर पे सेंड करते हैं। भाई इधर को टी है वो पेज की है साइट टूवर्स टूवर्स जानिए अब क्या मसला है। मसला बताओ मसला जैसा फाइल फोल्डर रजिस्टर टूवर्स इज इक्वल टू टूवर्स ऐसे कुछ लाइन आ गया। हाय 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 इसमें मेरे पास टूवर्स डॉट मैप टूर को पकड़ा और टूर करवा दिया अंदर फीस टूर डॉट आई डी लिखवा दिया बंद वही बंद और वही बंद। टूवर्स डॉट मैप टूर को पकड़ा टूर करवा दिया अंदर कंपोनेंट और टूर करवा दिया कीज टूर डॉट आई डी लिखवा दी। मैं भी तो यही कर रहे हैं भाई यार, क्या मसला है। यहाँ पे रिटर्न में लिखा तो ये तो नहीं मसला था। रिटर्न फिट है वो भाई फिट है वो। कोई हाल नहीं यार, कोई हाल ही नहीं लड़के, कोई हाल ही नहीं है। चलिए हम ये डाटा फ्लो देख रहे हो क्या क्या हुआ है। तो बंद हो गया हमारा चल पड़ा है। अच्छा जी, ऐसे भाई सब रिटर्न नहीं थे कर रहे अपनी मर्जी से उसको। चलो तुम्हारी मर्जी है, अब तो तुमने रिटर्न कर ही दिया है।
अपना बताओ क्या क्या किया ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर हमने यहाँ से टूवर्स को एज ए टूर पास किया। सब टूवर्स में डाटा डॉट जैसा था क्रॉप्स में हमने इसको बता दिया टूवर्स इज इक्वल टू क्रॉप्स और ये टूवर्स जो है हमने एज ए टूर वगैरह इस्तेमाल कर दिया। क्रॉप्स क्रॉप्स आ गया इसका अब इसके ऊपर हमने मैप का फंक्शन लगा दिया और इस मैप के अंदर हमने एक टूर जो बनाया ना उसको बार बार यानी कि कितने दफ़ा टूर हो तो इस सबको यानी कि बार बार करना है वापस तो टूर डॉट आई डी एक रख दी इसकी और टूर को डिस्ट्रक्चर कर दिया। अब इस टूर में आ जाओ इस टूर को इसके अंदर इंपोर्ट किया और इसको यहाँ से इसके अंदर इंपोर्ट कर दिया। सही है तो इसके अंदर एक हमने पूरा वो उसका बनाया जिसके अंदर हमने उसके क्रॉप सेट किए इमेज के। ठीक है इमेज रखा उसका नाम रखा फिर नेम रखा फिर उसकी हमने आगे यानी कि एक टूर का स्पेसिफिकेशन बनाया फिर दो ऊपर इमेज है एक। ठीक है सिंगल टूर के नाम से फिर उसका एक इमेज सोर्स है और उसका एक नाम भी है। फिर उसके बाद एक नेम है बेस्ट ऑफ पैरिस इन 7 days टूर। ठीक है फिर आगे उसकी $1 में प्राइस है H4 में फिर आगे उसकी एक इन्फो है सारी की सारी नीचे पैराग्राफ और फिर आगे उसकी एक डिलीट का बटन है नॉट इंटरेस्टेड है। ठीक है अब इस नॉट इंटरेस्टेड को कारीगर बनाना है ना और साथ में इधर एक बटन लगाना है जो कि हमारा होगा अगले को उसमें बताएगा क्या होगा। 3 बजे इबादत की जाए नमाज पढ़ ली जाए ये दोनों ख़त्म कर ही लें आज की स्ट्रीम में। इसको कंटिन्यू करके अगर आगे कर लिया जाए तो क्या कहते हो दोस्तों। रीड मोर का बटन भी आ गया इसमें एडिंग रीड मोर बटन है यू लिंक द रेट और अगर यू कैन सी द एरर स्टेटमेंट इज टू लॉन्ग लेट अस अगर अलाउंग अ पर्सन टू रिव्यू द फुल डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी ये जो रीड मोर है ना ये ऊपर आ गया इसकी डिस्क्रिप्शन आ गया challenge instruction के पास this lab take care of the following inside your tour from JSX file create a state variable called read more। अच्छा जी read more के अंदर सेट करो write logic to show the first 200 factors of props.info in your p tag inside this file if read more state variable is true if it is false show the full props.info hint। अच्छा जी const str is equal to my awesome string और const smaller string is equal to string dot substring stores 5 सब string कर दे 0 से 5 तो इसमें क्या है 200 करैक्टर ये आ जाएगा string string हमारी जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो इंफो के अंदर पड़ी हुई है मेक नोटिफिकेशन हियर। पहले तो हमने क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल बनाना है यहाँ स्टेट वेरिएबल क्या है रीड मोर का कॉन्स्ट रीड मोर और सेट रीड मोर इज इक्वल टू यूज
रीड मोर और साइड रीड मोर का बन गया। इफ इट इज फॉल्स शो द फुल प्रॉप्स और इन्फो। इन्फो जो है ना अभी बेसिकली लंबा लॉजिक है, समझ आ गई है मुझे कि क्या होगा इसमें। मैं बताता हूँ। इसमें हमने करना है जो दो डील्स शो करनी है यहाँ पे। पी जो है ना, पी ये दो होगा। एक जिसमें रीड मोड का बटन नहीं होगा, एक जिसमें रीड मोड का बटन होगा इन्फो के साथ। और दूसरा जो है ना इन्फो के साथ, जो इन्फो के अंदर स्ट्रिंग है ना, तो हम एक कॉन्स्ट में रखवा के ना उस कॉन्स्ट को स्मॉलर स्ट्रिंग बनवा देंगे। यानी स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग करके 0 और इधर 200 डाल देंगे, तो वो पहले 200 करैक्टर दिखाएगा। ऐड अ न्यू बटन इनसाइड योर p tag done for you which when clicked should toggle the value of read more straight variable। इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक लगेगा। This button should conditionally show the following text: if read more is true then show less, otherwise show read more। अच्छा जी, ये वाला जो है ना, इसका भी जो वो है ये डाटा, ये भी इसके साथ शो हो। सही हो भाई, ये भी स्ट्रेट वेरिएबल बनेगा एक। रीड मोर भी, और ये शो लेस में चेंज होगा। यार नहीं तो वो पूरी की पूरी डीबी जो है हम उठा कैसे रख रहे हैं। पी जो है ना पूरा का पूरा, अगर तो वो जो यहाँ पे इसको ट्रू रख देते हैं। ट्रू यहाँ पर अगर हम इफ रीड मोर तो इन्फो ऐसे करके शो करें। कैसे करेंगे यहाँ पे करें, इसको चेक करें, रीड मोर को चेक करें, यहाँ पे चेक करें, इस लाइन में आके रीड मोर को चेक करें। रीड मोर को चेक करें, रीड मोर को चेक करें। सारा का मेरा एक नंबर है। हुआ है तो यहाँ से देखना भी शो कर देगा। लेना है आपने हेल्प भी लाऊंगा, फिर कुछ होगा तो अच्छा यहाँ शो लेस अभी देखो सही आ रहा है। सही हमें इस इन्फो को ट्रेन करना है बेसिकली।
देखने लगता है सब स्ट्रिंग करना है, ये कर दिया है इन्फो डॉट सब स्ट्रिंग में कर दो 0 और कॉमा 200 ओए होए 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 बेहतरीन हो गया यार। अब जैसे ही इस रीड मोड पे क्लिक हो तो रीड मोड वहाँ पे गया बटन भी ऐड कर दिया था मैंने। अच्छा यहाँ पे क्लिक हो तो ये शो नहीं बोल के बस उसको सेट करना ऑन का एक मेथड लिखना है हमें इसके अंदर हमें इसके अंदर ऐसी करके कर देना है और इसके अंदर कर दो सेट रीड मोड को फॉल्स कर दो कर दिया और इसी ऑन क्लिक को पकड़ा ऑन क्लिक पकड़ के यहाँ से पकड़ा यहाँ एक रेक्टेंगल पकड़ेंगे देखना तो दोनों के सीख लिया ये इसी बटन को ला के ये भी लगा दिया और इस पर कर दिया पूरी वापस और इस पे करोगे तो ट्रू हो जाएगा रीड मोर पे करेंगे और चल जाए रीड मोर मैंने तो किसी और भी पकड़ लिया रीड मोर का बटन कहीं और पे रीड मोर का तो मैंने ये इतना लिखा ही नहीं है बटन के अंदर इस तरह का कुछ रीड मोर का तो हाल है तो हुआ यहाँ पे इन्फो डॉट स्ट्रिंग काम कर गई बटन भी काम कर रहा है नहीं है तो थोड़ी दिखानी है ना यार यार उल्टा कर दिया मैंने किसी को वो कर ली यार ट्रू का ट्रू ही रहना देना ट्रू पे उसमें अच्छा इसे तेरी खैर रीड मोर यार रीड मोड एक स्टेट है जो कि ट्रू है तो अगर ट्रू है तो छोटी स्ट्रिंग शो करने लग गया है वो 0 से 200 तक इनको वो कर दिया ऐसा लेकिन बटन ऑन क्लिक पे मैंने लगा दिया सेट रीड मोड ट्रू और सेट रीड मोड फॉल्स पता नहीं क्या हो गया है देख लेते हैं 4 मिनट रह गए हैं अब इसके बाद मैंने एडिंग आईडी हमने रखी थी ना इसके ज़रिए से रिमूव होना है वो उस आईडी को कैश करेगा यूज ट्रेड में जाके नॉट इंटरेस्टेड वाले बटन पे ऑन क्लिक पे लगेगा और उस आईडी को पकड़ पकड़ के करता जाएगा सेट देखो मैंने क्या किया भाषा में रीड मोर स्टेट नॉट स्टेट
एक ही बटन पे सारा कुछ कर दिया, मैंने दो कर दिए पकड़ के। इसने क्या किया, इसने पकड़ा उसको रीड मोर को, चेक किया, ट्रू है तो ये शो कर दो, नहीं ट्रू है तो सिंपल को शो कर दो, ऐसे ही कर दिया इसने। इसने टेम्पलेट लिटरल्स का साथ ले लिया है, टेम्पलेट लिटरल्स में इसने इसको लिख दिया है। और मैंने तो ऐसे किया है, स्टेट को बस नॉट स्टेट करना है यार, बाकी वाला काम सही चल रहा है। नीड मोर को शो लेस में भी तो कन्वर्ट करना है ना उस बटन को। तो हम क्या करेंगे, सेट सेट रीड मोर जहाँ पे किया ना, मोर स्टेट कर स्टेट को पकड़ो और ड्राइवर चेंज करना उसको। यार इसका मैं कर देंगे, ये अभी कर दो, अभी कर दो, क्या करते हैं सही है यार, क्या बटन के पावर क्या है। मिलेगा डॉलर साइन लगा। अगर नहीं सही होएगा कोई रिकॉर्ड पूरा पट्टा ही नहीं चला, स्ट्रेट को नॉट स्ट्रेट कर दिया।
ये मैं कभी ये रीड मोर को देखेगा हुआ तो करेगा रीड मोर नहीं सही हुआ तो कर देगा शो लेट्स चल पड़ यार ऑन क्लिक पे चल क्यों नहीं रहा सेट रीड मोर स्ट्रेट में पकड़ कर नॉट स्ट्रेट करता रहा यूज स्ट्रेट रीड मोर और सेट रीड मोर की हो गया कितने रह गया मसला अरे यार रोज ऐसा टाइम ना ज़ाया कराया करो मैंने पढ़ना भी है वो नमाज भी पढ़नी है वरना मैं बंद कर दूँगा पता नहीं क्या मसला आ गया मैं कर तो दिया तुम दिखा दो क्या चाहते हो पता नहीं है बटन यहाँ पे क्लोज हो रहा है रीड मोर इसके अंदर मेरी दफ़ा मेरी नहीं करता जाता है अच्छा बस यही मसला आ रहा था यही मसला आ रहा है कोई और मसला भी है भाई साहब उसने ऐसे कर दिया भला हो होम क्लिक का वही फंक्शन ही गलत लगाया हुआ इतनी देर से 6 10 कर लो अब पहला भी सही था वो भी वही यही था बस उसने थोड़ा सा वो ऊपर जा कर रहा था ऑन क्लिक का वही गलत लगा रहा तुम्हारा मेथड ही सही देर से तुम उसको लगे हुए उनके दो ही तरह करने ऑन क्लिक नहीं चेक किया यार फ्रेश मैन इतना छोटा सा वो मसला और वो भी तब वो चल रहा है वही यार नहीं वो रीड मोर वो पहले भी चेक करके पूरी पूरी टीवी शो हो जानी दिल ये टेम्पलेट वाला भी चलो पता लग गया ऐसी बात इन्फो डॉट सब स्ट्रिंग मतलब मैं तो ये उसको उधर ही कर दिया था वो डबल वाले का मसला नहीं था मसला वन क्लिक का ही आ रहा वन क्लिक को नहीं रीड कर रहा था मैं भी कहूँ सब स्ट्रिंग उसमें छोटा कर दिया शो कर रहा है लेकिन रीड मोर का बटन क्यों नहीं चल रहा इससे पहले कि ये बंद हो इसको मैं टेस्ट करूँगा मैन रह गया उसको कॉल करके कंप्लीट कर लेंगे यही हो सकता है ओके दोस्तों यार 3:30 होने लगे मैंने नमाज भी पढ़नी है अभी तक चल के सारी समझा कुछ रब से मांग भी लें अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा